वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप समस्ते बहुत ही भल थे। सो चैनल डिस्कस करबा सम एमसीक्यूज अबाउट इंडियन इकोनॉमी फोकसिंग ऑन फीचर्स एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड एंड पॉलिसी फॉर फेसिंग ओवर पॉपुलेशन चैलेंजेस। ओके, फर्स्ट देखो तो कौन दे जी, which demographic feature best describes India's population structure? So India रो population structure को आ भितर को demographic feature टा best describe करूची। ओके, सो देखो तो aging population with low birth rate, young population with high working age ratio, equal distribution of age groups, declining population growth. So आरो correct answer होगा पिला माने option number B, young population with high working age ratio. So India has a large youth population, right? Meaning significant proportion of its population is in the working age bracket. मतलब आपण कोण ना 15 रु 64 वर्ष। ओके, एंड आपको हमें ऑल्सो आउ को नाम रे जानछु पिला माने डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन पिला माने डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, India's population growth is primarily driven by, okay, India's population growth is primarily driven by this: high fertility rates in rural areas, immigration from neighboring countries, increased life expectancy only, urbanization alone. Okay, so primarily कहा द्वारा driven हुए पिला माने आरो correct answer होची कौन पिला माने high fertility rates in rural areas. Okay, so when life expectancy has increased and urbanization is a factor, high fertility rates particularly in rural regions have historically been the primary driver of overall population growth in India. तापर देखो the dependency ratio in India indicates, कौन indicate करूची पिला माने आरो डायरेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, proportion of non working population to working population. ओके, सो डिपेंडेंसी रेशियो को आम जब मेजर करको चाहिए, ठीक अच्छे। सो जदि मुझे कह डिपेंडेंसी रेशियो विषय यहाँ गोटे मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जे माने आपनको डिपेंडेंट अच्छा ना, माने जे माने काम करें, जे माने पैसा इनकम करें, जे माने वर्किंग नुहंती, तो आपनको 0 रु 14 जे पिला माने अच्छे एंड आपणकर जो लोक मैंने 65 एभव हो जाइछंती तो तांको विषय टी कहुची। ओके, व्हिच पॉलिसी एम्स टू मैनेज ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया? ओके, को पॉलिसी एम करछि कि से मैनेज करि परिबो ओवर पॉपुलेशन इंडिया रे? ओके, सो आंसर होची आपणकर फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। Okay, so government of India has implemented various family planning and reproductive health programs to stabilize growth and improve maternal and child health outcomes. Okay, सुनी चना बच्चे दो ही अच्छे। Okay, the National Population Policy 2000 focused on, आपण को जो national population policy अच्छी 2000 सेटा कहाँ पर फोकस करूची, मेनली कहाँ पर फोकस करूची पिला माने आपणकर stabilizing population growth through voluntary family planning. Okay, which demographic indicator measures the number of children a woman would have in her lifetime? So our answer कौन हो पिला माने total fertility rate. Okay, total fertility rate इटा होची आपणकर it is the average number of children that would be born to a woman over her lifetime if she were to experience the exact current age specific fertility rates throughout her reproductive years. Overpopulation in India leads to which economic challenge? कौन challenge आसीबो पिला माने? excessive saving तो हबो नहीं, inflation कमिबो नहीं, export competitiveness भी increase हबो नहीं, कौन हबो पिला माने overpopulation हे गले हमर pressure पड़िबो infrastructure रे, हमर unemployment ता बढ़िबो, right? A large rapidly growing population can put immense pressure on existing infrastructure. Infrastructure कौन पिला माने आपनकर हाउसिंग हे गला, आपनकर ट्रांसपोर्ट हे गला, ठीक अच्छे। एंड वन मोर थिंग पिला माने आपनकर सैनिटेशन हे गला,
ए सब आपंकर जाऊँगी कूड़े ना इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके आ अनएम्प्लॉयमेंट तो अपन जानी ठीक अच्छे जे मैंने को काम मिले ना जे मैंने अनएम्प्लॉयड होकी थांती नॉन वर्किंग। नंबर 8 पिला माने विच स्कीम प्रमोट्स एजुकेशन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। सो आ भितर को स्कीमटा आमर एजुकेशन को प्रमोट करुच्ची एंड ट्राए करुच्ची कि आपण को पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। ओके आपण शुणुथे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ गोटे एमती स्कीम जहाँ फोकस करुच्ची से एजुकेशन को प्रमोट करिवो। ओके आउ अवेयरनेस आनिबो फीमेल एजुकेशन विषय ठीक अच्छे ता द्वारा कौन हम आमर पॉपुलेशन ग्रोथ रे कंट्रोल आसीबो। ठीक अच्छे आम फीमेल मानू को एम्पायर करि परिबा तांकर इनफॉरमेशन और रिसोर्स प्रति एक्सेस को बढ़ाई परिबा। द क्रूड बर्थ रेट इज डिफाइंड एज पिला माने जस्ट अपन मन रखिबे आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। ओके सो एटा गोटे डेमोग्राफिक मेजर ये आप क्रूड बर्थ रेट जो अच्छी यहाँ को यूज करूँ आम टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स ऑकरिंग इन अ गिवन ईयर पर 1000 पीपल इन टोटल पॉपुलेशन। ओके विच फैक्टर इज नॉट अ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक आ भर कौटा गोटे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक नुहे। ओके देखो कौटा नुहे आंसर नंबर सी लो लिटरेसी रेट इन ऑल स्टेट्स। ठीक अच्छे यहाँ आपणकर नुहे। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया एम्फासाइजेस आपण को इंडिया जो पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी से कहा ऊपर अधिका एम्फासाइज करुच्ची आंसर हम कौन पिला माने इम्प्रूविंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ मैटरनल हेल्थ। ओके सो इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसीज हैव हिस्टोरिकली फोकस्ड ऑन वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आ कौन ना इंक्रीजिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। Okay, the economic impact of a young population include test पिला माने ना potential demographic dividend if scaled. Okay, so a large young population present करुची an opportunity for demographic dividend आमे पढ़ी के आसलु पिला माने which is potential for economic growth that can result from shifts in population age structure provided the workforce is educated, skilled and healthy. देखो which state in India has the highest population density highest population पिला माने कोठी अछि आपनकर बिहार रे। ओके सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेमोग्राफिक डाटा बिहार कंसिस्टेंटली रैंक्स एज द इंडियन स्टेट विथ द हाईएस्ट पॉपुलेशन सब अधिक पॉपुलेशन आपनकर बिहार रे। ओके ओवर पॉपुलेशन स्ट्रेन्स व्हिच सेक्टर द मोस्ट ओवर पॉपुलेशन पिला माने कोठी आपनकर देखा जाय ना पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन। ओके आगो जा पिला माने द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू डैश पिला माने हमें जस्ट पढ़ी के आसलु इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। ओके आपनकर जे डेमोग्राफिक डिविडेंड एटा होची कोटा आपनकर इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके दैट कैन अराइज व्हेन अ कंट्री हैज लार्ज proportion of its population in the working age bracket माने जे माने वर्किंग रे अछि माने आपनकर 15 रु 64 वर्ष। ओके which policy measure directly address over population's health impact कौन हम पिला माने ना universal immunization and maternal health care। okay universal immunization and improved maternal health care directly address health impacts associated with overpopulation by reducing disease spread and improving health। ठीक अच्छे हेल्थ को इम्प्रूव करिवो outcomes from mothers and infants which can also contribute to lower mortality rates and a more stable population। okay India's population is expected to stabilize by which year by current policy केते पिला माने 2050 पिला माने। ओके पॉपुलेशन में एक्सपेक्ट करछ स्टेबलाइज हे जिवो 2050 आडे। ओके व्हिच डेमोग्राफिक चैलेंज अफेक्ट्स रिसोर्स एलोकेशन कोड़ा हम पिला माने आपन रैपिड अर्बन माइग्रेशन ऑफ स्लम ग्रोथ। ठीक अच्छे सो रैपिड अर्बन माइग्रेशन एंड द रिजल्टिंग स्लम ग्रोथ सिग्निफिकेंटली कौन करुच्ची स्ट्रेन करुच्ची रिसोर्स एलोकेशन को इन सिटीज इम्पैक्ट करुच्ची हाउसिंग सैनिटेशन पब्लिक सर्विस ये सब। ओके द मेन गोल ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग इन इंडिया मेन गोल कौन पिला माने पॉपुलेशन प्लानिंग रो
सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ओके এটা হচ্ছে আপনার মেন গোল द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग कौन टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस करवा द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स सिटीजन ठीक अच्छे एसबू आपंकर which initiative focus on skill development to utilize the demographic dividend कि पिला माने स्किल इंडिया मिशन सो स्किल इंडिया मिशन गोटे आपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेशली डिजाइन करा है टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ ठीक अच्छे आपनकर स्किल डेवलपमेंट आपनकर जे ट्रेनिंग अच्छे आपन यूथ मान को दिया हबो एम करा होची कि आपन लेवरेज हबो द कंट्रीज लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ओके सो पे मैंने यहाँ थी आप 20 बछा बछा एमसीक्यू जोटा कि आपंकर एग्जाम रे भी आसी एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू एंड जो आप वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करने को भूलें नहीं एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल थैंक यू